Good evening, student. In this video, we will compare the process of transpiration with the process of photosynthesis. As in case of transpiration and photosynthesis, comparison. As the process of transpiration is having more than one use, the transpiration is mainly responsible for absorption as well as transport of water. So transpiration is responsible for absorption and transport of water. Secondly, transpiration will also provides supply for water of photosynthesis. So it will also supply the water for photosynthesis. Thirdly, the transpiration is mainly responsible for transportation of minerals in case of plant. So it will help in transport of minerals in plant. And lastly, the transpiration will also help in maintaining the shape and size of the cell. As transpiration is responsible for absorption of water, this absorbed water will help the plant in maintaining the turgidity. So this turgid condition will provide the shape and size to the plant cells. So it helps in maintaining shape and size of plant. Compared to photosynthesis, which is only a food producing process, a transpiration is a main process which supplies water for photosynthesis, and if the transpiration is stopped, then photosynthesis will also get stopped. This transpiration is also responsible for high humidity in case of rainforest. The humidity in rainforest is due to a continuous exchange of water from soil into the atmosphere with the help of plants. So humidity in the rainforest is mainly contributed by the process of transpiration. As transpiration is a continuous process, it will continue day and night, and adequate amount of water is a very essential factor to transpiration to takes place. वाटर हमेशा एडिक्वेट क्वांटिटी में चाहिए रहेगा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को ठीक से होने के लिए। इसलिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांसपिरेशन और उसके कारण लिमिटेशन जो है फोटोसिंथेसिस का वो कम करने के लिए कुछ खास मैकेनिज्म्स डेवलप किए। जैसे अगर हम C4 प्लांट को कंपेयर करें तो C4 प्लांट्स विल रिक्वायर्ड half the amount of water compare to C3 plants. C4 प्लांट में C3 प्लांट के कंपैरिजन में सिर्फ आधे ही अमाउंट ऑफ वाटर से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ठीक से हो जाएगी, एंड C4 प्लांट आर ट्वाइस इफिशिएंट इन फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड कंपेयर टू द C3 प्लांट. सो C4 प्लांट आर ट्वाइस इफिशिएंट in fixing CO2 compared to C3 plant. So C4 evolution is actually a strategy to minimize the water loss and efficiently using the carbon dioxide. So C4 प्लांट ने इवोल्यूशन जब हुआ, C4 प्लांट ने जो स्ट्रैटेजी डेवलप की वो स्ट्रैटेजी इसीलिए डेवलप हुई कि वाटर का लॉस कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सिंग ज़्यादा इफिशिएंट तरीके से हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट द एब्सॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन केस ऑफ प्लांट्स. थैंक यू.